The very first institutional reform that he did was the change in the perception of law and order, change in the way the police force works in Uttar Pradesh, and a zero tolerance to crime and criminality. We also ensured that every recruitment had 30% women coming into the system. Government of India is aiming for 5 trillion. Why should we be 1/5 of that, which is 1 trillion? An integrated court complex. So that infrastructure part is now in place. We were part of that journey, so I'm very happy to say that now our state has increased the infrastructure expense. Avnish Awasthi ji, as the advisor to the Chief Minister, is the topic of this fireside chat is institutional reforms. I want to know from you what has changed in the last 9 years from an institutional point of view. Of what is and where is UP right now after 9 years, and it's in its 10th year in the second term of the Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji. A long distance has been covered. We have been in governance since 87 and almost completing almost about 40 years, and we have seen any number of governments coming. When we joined this state in 2017 as part of this bureaucracy here in Uttar Pradesh, Yogi ji was very clear that institutional reform has to start with the rule of law to be established on the ground and a zero tolerance to crime and criminality. Part of the entire exercise is what visually looks as the bulldozer action. Part of the exercise is what happens on the ground in terms of action against the mafia. But I'll just give you 4 or 5 things because I've been part of the Home Department also. The very first institutional reform that he did, and when he did the reform, he meant it and ensured it, was the change in the perception of law and order, change in the way the police force works in Uttar Pradesh. And by the way, Uttar Pradesh is the largest police force of the world. So we are handling the largest manpower of law and order in the entire world. With that, when he started off with the law and order machinery of the state, he was very clear that we have to literally change the complete scenario and the way people look at the police. You have asked me on institutional reform, so since it's a very learned audience, I'll just put 5 or 6 things that he did very systematically. And that is what ensured that the entire institution of the UP police was changed. One, we had very little manpower within our UP police. Posts were vacant for quite a while. Proper recruitment had not been done. Recruitment which were done in the past were questioned by the courts all across for the last 10, 15 years. But when Yogi ji came, he got this very clear in his mind that we have to increase the size of the force, but it has to be very transparent and we get the best manpower for our UP police. So he ensured that more than 2.5 lakh new police personnel joined over this last 8 or 9 years. And the institution that we have, which is the UP Bharti Board, that was totally refurbished. Technology was used, and from a 3.5 lakh UP police number, we are now crossing to 5.5 lakhs. Within this first aspect of UP police, of increasing the size of the force, we also ensured that every recruitment had 30% women coming into the system. And earlier, when we started in 2017, the women workforce in the police was only 10%. It is now crossing 20%. And very soon, we will achieve the target of having 30% women within our force. So that was the first pillar. The second pillar was infrastructure within the UP police. What is the infrastructure of the police? And I'm speaking of this not just for the police, but for the fire department, for the jail department, for the intelligence department, for the various organs within the entire police force. The infrastructure for a UP police establishment is Thana, the barracks for the policemen, the housing arrangement for the entire police force, the infrastructure for the fire stations, the infrastructure for the
a state headquarters of all the various organizations. A special security force was also established on the lines of CISF. Infrastructure for all of that. Infrastructure for the STF. Infrastructure for the UP ATS. So all of this was done, and our infrastructure fund, which was hardly 800 to 900 crores for UP Police, has now been increased over the years to about 5,000 crores every year. So this infrastructure is now ensuring that modern Thana buildings are available, that barracks are available for every policeman of our state, including women. And we now have, for the first time, multi-storied 8, 10, 12 floor structures within the UP police headquarters of every district, which are called the police line, for the very first time. So now you have almost 50 to 60% of the police force already accommodated in government accommodation. So the policeman is very sure that his family is safe within an environment where his children can also have a reasonable and decent life. I can also tell you that new districts in our state, all these districts, Chandauli, Amethi, Shamli, all of these, Hapur, all of these districts for the last 15 years, they had been treated long back. We saw them long back. They never had a police line. They never had a district jail. They didn't have an integrated court complex. So that infrastructure part is now in place. We were part of that journey, so I'm very happy to say that now our state has increased the infrastructure expense. Third aspect, technology. Why can't we use the best of technologies for all the police organizations within our system? So the best of technologies for cyber security, the best of technologies for the forensic labs, the best of technology for the intelligence gathering, all of this was put in place and a lot of money was spent. And UP 112, we have now a separate brand new UP 112. What was about 14 minutes of response time for UP 112 has now come to almost 6 minutes. It was all possible through new technology and a lot of effort in the area of technology. I can tell you the Forensic Institute, which was the Shilanyas was done by the Honorable Home Minister, Government of India, and the inauguration was done by the Prime Minister. No state in the entire country has a Forensic Institute of this nature, which caters to the technology and the training requirements of our force. So this was the third pillar. The fourth pillar was what was most important, and that was prosecution. Our police force filed the charge sheet. Our police force went up to the courts, but prosecution was very poor. The prosecution machinery was not effective, and we had, I can tell you, I have served in a district where we had a mafia who was a registered mafia. He had almost 99 or 100 cases. Not a single case was he convicted ever, and he had a history of crime right since 1996 when I was posted in Azamgarh. Not a single conviction. Now we have in our state the best conviction machinery. We have the best conviction rate in the entire country, and the conviction rate not only is excellent in the criminal areas, but is also excellent, is the best in the women crime area, in the POXCO cases and all of this. So the fourth aspect was putting the conviction machinery, the prosecution machinery in place, and this was monitored and followed up. And the fifth area where the state did well was coordination with the judiciary, coordination with other, the Government of India, coordination with all other stakeholders within the law and order. And this is again here that the new commissionerates of police were formed in 7 districts. And now you all know that the size of the UP police force within the officer system also has now increased. So that was the change. So I just thought I'll put it right across the board that this is what was done very systematically. And I'm so very happy to tell you that the Chief Minister of Uttar Pradesh, who is also the Home Minister of Uttar Pradesh, reviews the law and order of the state every day at 9 or 9:30 in the evening with the senior officials of the Home Department and the police force. And he is very hands-on and very clear that there should be zero tolerance to crime. And he is very, very clear that माफिया अगर है तो छोड़ना नहीं है. माफिया की ज़मीन खाली करो. यहीं लखनऊ में कोई भी जाकर देख सकता है कि माफिया की ज़मीन पर खाली करके
गरीबों के लिए आवास बनाएगी। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला लेट्स पुट सम फायर इन द फायरसाइड चैट, Yes. राइट? यू हैव मेंशन्ड 5 institutional reforms related to policing in the state. Yes. I can't challenge your आपके आंकड़ों को मैं चुनौती नहीं दे सकता, जाहिर सी बात है आप प्रशासन में हैं, आपने उसको अच्छे से स्टडी किया होगा। जिस एस्पेक्ट को आप छू करके निकल गए अवनीश जी शुरुआत में, उस पर ज़रा बात करते हैं। एंड दैट many institutes, many individuals, courts have occasionally called an extrajudicial form of ensuring justice, bulldozer action। और अभी क्योंकि मैं ऐड कर दूं, अभी ही एक तस्वीर आई है सर जिसमें fire for you। अपना सवाल Fire for कंप्लीट कर दूं। हाँ, मेरा हाँ। सवाल ये है, हाँ। उसमें एक आरोप ये लगता है कि यूपी पुलिस लोगों के साथ हाफ एनकाउंटर करती है, तो क्या ये एक्स्ट्रा जुडिशियल फॉर्म ऑफ जस्टिस इज ऑल्सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको अंदाजा है कि यहाँ पर हमारी कोर्ट्स में कितने मुकदमे किस किस सन के पेंडिंग हैं? मैं होम सेक्रेटरी था, एक बार मैंने रिव्यू किया और फिर हम लोगों की पेशी भी हुई। 40 साल से मुकदमे पेंडिंग हैं, 40 साल से जो है पेशी नहीं हुई। सो आप प्रदेश चला रहे हो ना डे टू डे, मिनट टू मिनट बेसिस। कहीं गाड़ी लड़ जाती तो आप चाहते हैं कि तुरंत एक्शन भी हो जाए, और यहाँ तो पुलिस से एक्शन आप मिनटों में चाह रहे हैं, और कोर्ट से एक्शन आप सोच रहे हैं कि उसको 10 साल बाद भी करेंगे। ये प्रश्न आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप पे पूछने की आप पूछेंगे किससे? जुडिशरी से पूछेंगे। आप पूछने वाले कौन हैं? आज की तारीख में पूछने वाले कौन हैं कि क्या कोर्ट्स में इतने सारे मुकदमे जो पेंडिंग है, और कई बार निर्दोष लोग भी कोर्ट के मामले में जो है अगर अटके हुए हैं, तो उनको कौन देखेगा? समस्या ये है कि अगर हमें एक्शन लेना है, अगर हमें कार्रवाई करनी है, तो बात इस बात की है, कार्रवाई तभी होती है जब कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। ये बात आपकी ज़रूरी है कि अगर कहीं एनकाउंटर है तो उसके सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई एनकाउंटर होता है तो उसका आप तुरंत इन्फॉर्मेशन देंगे। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द इकोनॉमी। यस, Uttar Pradesh boasts of building itself a $1 trillion economy state. यस, Now, how does वी वर द फर्स्ट वन टू डू दैट। exactly? योगी जी जब आए तो उन्होंने कहा, 2023-24 की बात है, कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना दिया और विकसित भारत में 2047 का सपना इवॉल्व होने लगा, तो ये कहा गया कि यूपी 20% है पॉपुलेशन का, पूरे देश का लगभग 17-18% है, तो हमको भी 1/3 होना चाहिए। हम भारत सरकार का लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, और बहुत जल्दी अचीव होने वाला है। वी विल बी अ $5 trillion इकोनॉमी, वी ऑलमोस्ट अराउंड 4 trillion और सो। सो इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एमिंग फॉर 5 trillion, why should we be 1/5 of that, which is 1 trillion? But तो 1 trillion जो है ये लक्ष्य रखा। 1 trillion ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। Let's put the fire again. बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विजन जो है, बहुत सारे जो सपने हैं, सुनने में अच्छे लगेंगे ही, और लेकिन काम भी बहुत करना पड़ेगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। लेकिन नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है अवनीश जी, one is this $1 trillion of contribution to the GDP, the other is per capita GDP। ये इतना जरूरी है कि अंत के आदमी तक आपका विकास पहुंचे, उसके लिए क्या प्रयास हो? सर, आज की तारीख में 2017 के बाद से जो पर कैपिटा इनकम, मनोज जी भी अभी बता कर गए हैं, लगभग जो हमारे नेशनल लेवल की 50% के आसपास थी, अब वो पिछले साल 1,09,000 रुपये तक हो गई, और लगभग इस साल के अंत तक जो है 1,20,000 रुपये तक हो जाएगी। तो वी हैव रिवर्स द ट्रेंड एंड वी आर ऑलमोस्ट अचीविंग 53 to 54% of the national average. So the curve is now changed. In fact, if you see our first time economic survey has been presented, it very clearly states that we have bucked the trend and we are now increasing our contribution for per capita income in the state. Now, this is only possible if you have large-scale industrialization. If you have talked of $1 trillion economy, just now it was very clearly said, we are now the largest agricultural producer, food grain producer in the country. But we have a long way to go. So where do we need to move forward? In the agriculture and the allied sector, we have to be almost 2.5 times. That is 1 trillion. In the manufacturing sector, we have to increase the number of industries. Number of industries which were registered in 2017 were only about 13,000. Today we have crossed 31,030 or something, and we will cross another maybe 500 or 1,000 odd factories within the current financial year itself.
which means more than double the number of factories have been registered now in Uttar Pradesh. So industry has to grow by 1 trillion. If we have to grow by 1 trillion, industry has to grow about 3.5 times. But you know, Avnishji, Service sector, which is the third sector, again, if we have to reach 1 trillion, we have to grow by about 3 times. see the point that Avnishji, how do you, and I heard Manoj sir also, Yeah. you've got Gautam Budh Nagar, which is the big contributor. Yes. The state's Gautam Budh Nagar, Ghaziabad, Ghaziabad, exactly. NCR. Now, how do you ensure that the districts that have been left behind traditionally, वो आप ही के 9 साल में नहीं, पहले से भी वो उनका contribution बहुत कम है. Per capita अगर आप देखें वहाँ पर वो some of the districts are lagging behind. आज भी पिछड़ी हैं. देखिए, उनका उत्थान कैसे होगा? ये इंडस्ट्री देखिए हम आपको 2-3 चीज बता दें. इकोनॉमिक्स इज वेरी क्लियर दैट जो चीज जहाँ मजबूत है उसको वहाँ करना पड़ेगा. आप आर्टिफिशियली इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के विपरीत इंडस्ट्री श्रावस्ती में लगाने नहीं जाएंगे. आपको जो है इंडस्ट्री एनसीआर में लगाना पड़ेगा, लखनऊ रीजन में लगाना पड़ेगा, वाराणसी जौनपुर रीजन में लगाना पड़ेगा, प्रयागराज रीजन में लगाना पड़ेगा. जो उस एरिया की स्ट्रेंथ है, रॉ मटेरियल की, लॉजिस्टिक्स की, मैन पावर की, उस एरिया के स्ट्रेंथ के बेसिस पर लगाना पड़ेगा. मैं आपको केवल इतना बताना चाहूँगा, अभी आपको बताया गया कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है विच इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 30-40% ऑफ व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल. सो 28 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट हैज़ बीन टेकन अप फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. सो ईस्टर्न यूपी में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग का पूरा एरियाज़ को अगर आप पुश करेंगे तो बहुत आगे जाएगा. सोलर पॉलिसी, we were part of this movement of solar policy. I retired as the power secretary of the state. Today, Bundelkhand is moving very fast on the solar area, green hydrogen area. So Bundelkhand में आज आप जाएंगे तो great chunks of Bundelkhand are now getting solar parks. Our land is relatively more fertile. We have more water than other areas of the entire country. But we are still pushing far in Bundelkhand, in this area. In Bundelkhand, because of irrigation projects which were lying for 30 years, we have started now in Mahoba, Jhalon and all these areas. You are now seeing the Jayat crop. I was at the Bundelkhand Expressway area only about 10 days ago on the ground, and मटर ट्रक के ट्रक मटर की जो है सप्लाईज दिल्ली के मंडियों में जा रही है. दोपहर दिन में जो है मटर तोड़ी गई, शाम तक इकट्ठा हुई, बोरों में पैक हुई, रात तक मूवमेंट हुआ, सुबह की समय में मंडी. तो बुंदेलखंड में अब जो है जायद फसल में मक्का, मटर, दाल, ये चीज़ें हो रही हैं. एनसीआर में आज जो है बहुत जल्दी ही आपका जेवर एयरपोर्ट आ जाएगा. जैसा अभी बताया गया, डेटा सेंटर्स, डेटा पॉलिसी, सेमीकंडक्टर का एक नया प्रोजेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी लॉन्च करने वाले HCL फॉक्सकॉन का 21 तारीख को. तो उस पूरे एरिया में GCC, सेमीकंडक्टर, डेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और इस पूरे एरिया को आगे बढ़ाना है. मैं अभी गौतम बुद्ध नगर में एक रोबोटिक्स फैक्ट्री में गया था, लगभग 2 साल पहले. आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था. रोबोटिक्स की एक फैक्ट्री में मैं गया था, उसका नाम है एडवर्क. उस रोबोटिक्स की फैक्ट्री में ITI ट्रेंड लड़कियां काम कर रही थी. और ITI ट्रेंड लड़कियां कहाँ की थी? सुल्तानपुर की, फैज़ाबाद की. ITI ट्रेंड लड़कियां गोरखपुर की थी. ITI ट्रेंड लड़कियां अमेठी की थी. अभी ब्रह्मोस फैक्ट्री शुरू की गई है, आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे. ब्रह्मोस फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, प्रदेश के लोग काम कर रहे हैं. तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए. कोविड में आपने देखा था कि पूरे देश के जितने हमारे यूपी के लोग बाहर काम कर रहे थे उनको वापस बुलाने, 40 लाख लोगों को वापस बुलाए गए थे ट्रेनों से. हम अपने प्रदेश में अपने प्रदेश के लोगों को ट्रेन करके एक मजबूती से आधार दे दें. इस बजट में 10 लाख लोगों की जो है स्किल ट्रेनिंग का एक पूरा बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रखी गई है. तो हम अपने प्रदेश में अगर हमारे किसी बच्चे को जो है श्रावस्ती से नोएडा काम करने जाना होगा तो बहुत खुशी हमारी होगी. जितना बेंगलोर, हैदराबाद और बाकी सब जगह है और चेन्नई है, इसमें अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की संख्या देखेंगे और बहुत सारे लोगों के बच्चे यहाँ काम कर रहे होंगे, आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लोग हैं. और विदेशों में भी आप जाएं तो उत्तर प्रदेश की काफ़ी संख्या है. कुछ स्टेट्स ने, आंध्र ने, बाकी स्टेट्स ने अपने प्रदेश से जुड़े लोगों को जोड़कर मजबूती से आगे बढ़ाया है. हमको भी अपने में विश्वास करके उत्तर प्रदेश के लोग विश्व भर में जहाँ अच्छा कर रहे हैं
जोड़कर प्रदेश को आगे बढ़ाएं। अवनीश अवस्थी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू संकेत जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टाइम्स ऑफ इंडिया।